alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, fine. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to welcome you all to the event that we have today, that the election of the new board members of IICCB, Indian Islamic Chamber of Commerce and Bureau. And I would like to take this opportunity also to welcome the new MC members who have come on board. And I think not all of them are available here. We have Mr. Shakil, and we have Mr. Vihar, and Mr. Atif, and Mr. Mujahid, and Muhammad Arif. Okay, thank you all for joining this event today. Ladies and gentlemen, this election that we have today is a small twist. You know, what has happened is normally we have different posts which are available for the eligible members to nominate themselves and get voted for the particular post. But as a coincidence or as a super coincidence, what has happened is we did not have any competition as such. We had the nominations filed a single nomination for a single post. So obviously what we had was we had to make a small change in the election process as such. And I would like to also thank Mr. Minhaj for accepting to be the election commissioner for this election. And I would also like to thank Isaac Amin for being the electoral officer. They've done a wonderful job in a short time period. They have made themselves available here to be with us, and we have completed the election process. And now I would like to hand over to the election commissioner to give the results as such of what we have today. We will be announcing the people who have been elected for the post, and we will also be handing over the certificate for the same, and so that it can come in a sequence. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे होस्ट मीनाज साहब हमें बहुत बेहतरीन जगह लेकर आए हैं, बहुत बेहतरीन खाना अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें खिलाया है। उसके साथ में हमें एक दुआ भी अल्लाह ताला ने सिखाया है कि जब मेहमान के घर में जाओ और दावत खाओ तो ये दुआ पढ़ लो। तो दुआ पढ़ने के वास्ते मैं सोचा हमें ग्रुप में पढ़ लेंगे दुआ, जिसे आती हो पढ़ लेंगे, जिसे नहीं आती हो मेरे साथ में पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा अतिम मन अतअमनी वस्की मन सहानी। तो ये दुआ पढ़ने की जो है ना आदत है, वो बचपन में मदरसे में सिखाते हैं और शायद दवा ज्यादा खाया होगा, वो दुआ भी याद हुई। दुआ पढ़ लेंगे। दूसरी बात जो है, मैं पेशे से मेमोरी ट्रेनर हूँ, मेरी हैंडराइटिंग ट्रेनर हूँ। मेरी ये बाई डिफॉल्ट प्रैक्टिस रही है कि जब भी मैं नए शख्स से मिलता हूँ तो उसका नाम मेरे दिमाग में बैठ जाता है, और इसकी वजह से जो है जब भी मैं उनको अगली बार मिलता हूँ तो उनके नाम से बात करता हूँ। जैसा कि अब मैं आरिफ भाई से मिला हूँ पहली बार जिंदगी में। अब मैं नेक्स्ट मीटिंग में आरिफ भाई को और हम मिले थे ना, ऐसा बोलने थे आरिफ भाई इलेक्शन के दिन मिले से याद है, तो इमीडिएट वो एक कॉन्टैक्ट होता है। एक अच्छे ताजिर की पहचान जो है उसकी याद आती है, पैसों के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में और लोगों के बारे में। तो अब यहाँ पर जो भी हैं, एक तो मेरे काबिल दोस्त हैं जो 4 साल 5 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, और जो नए लोग अभी जुड़े हैं उनके सारे नाम मुझे याद हैं। आप चाहें तो टेस्ट कर सकते। अब पहली बार जो मुझे आज मिले हैं, आप खड़े हो जाइए। जो आज मुझे पहली बार मिले हैं आप खड़े हो जाइए, मैं आपका नाम बताता हूँ, सही बताइए और गलत बताओ, आप मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है? स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह। राइट हैंड से। इनका नाम मुजाहिद साहब है, ये स्कूल चलाते हैं और ये बेंगलोर में रहने वाले। 3 चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है तो बैठ जाइए, गलत है तो आप खड़े हो जाइए, ठीक है? नेक्स्ट शकील साहब हैं जो रियल एस्टेट के कारोबार में इंटरेस्टेड हैं और सऊदी से शायद अभी रिटर्न आए हैं, और ये भी बेंगलोर में है, ठीक है? तो आप बैठ जाए। नेक्स्ट जो है आरिफ साहब हैं। आरिफ साहब जो है ना स्टेशनरी के कारोबार में है, और इंसिडेंटली इनकी फैमिली के बारे में अनिल भाई रास्ते में आते हुए बता रहे थे, और ईटा माल में रहते हैं, इनके पड़ोसी, ठीक है? बैठ जाए। अभी आप एक मीटिंग में जाते हैं, नेटवर्किंग के इवेंट में जाते हैं, और आप अपने कार्ड्स देते हैं,
अगर लोगों का नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए मैं एक टेक्निक सिखाता हूँ आपको। ये टेक्निक यूज कीजिए, हर हमेशा आपको इंशाल्लाह नाम याद रहेगा। ये टेक्निक का जो है सिस्टम ट्रैफिक सिग्नल का है। ट्रैफिक सिग्नल में 3 कलर होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। जैसे आप नए शख्स को मिले, पहले रेड से स्टार्ट कीजिए। आपके बारे में सोचना, दूसरे बारे में सोचना, आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचना, सब स्टॉप करना है रेड सिग्नल। यानी माइंड को फोकस करना है वो शख्स के ऊपर। एम्बर या येलो, अब प्रोसीड होना है। जब पहली बार एक शख्स अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, उमूमन क्या होता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन आपके दिमाग में सेट नहीं होता, उसका डिक्शन अलग रहता है, उसका लाउडनेस अलग रहता है। तो आपको पूरी परमिशन है, पहली बार जब मिल रहे हैं और शेक हैंड कर रहे हैं, मेरा नाम सैयद आरिफ है, आपको समझ में नहीं आया नाम, पूरी परमिशन है आपको, दोबारा आप रिक्वेस्ट करें, सॉरी आपका नाम क्या है। दूसरी बार भी पूछ सकते हैं, फिर भी समझ में नहीं है, तीसरी बार पूछ सकते हैं, 4 बार पूछ लीजिए। अगर ये पहला मौका है, 3-4 बार पूछ लेंगे, उसके बाद में आप फिर उनके नाम नहीं पूछेंगे। अगर आप पूछेंगे तो आप उनकी इंसल्ट करेंगे। एक बिजनेस एटिकेट है, आप इसे फॉलो कीजिए। पहली बार जब मिल रहे हैं लोग, अपने बारे में सोचना बंद करना, प्रोडक्ट के बारे में, सबके बारे में। अब क्या होता है, तो एक नए आदमी को मिले तो पहली बार मैं कैसा बात करना, मेरा इंट्रोडक्शन कैसा देना, मैं कैसा लग लूं, वो स्टॉप करना। सेकेंड, वो आदमी जब बात कर रहा है, कंप्लीट उसे फोकस करना, आंख से भी देखना, कान से भी सुनना, फोकस्ड। नाम, पेशा और उसकी रहने की जगह, ये 3 चीजें आपको नोट करना बहुत जरूरी होता है। ये प्रैक्टिस आप करेंगे। सिग्नल रेड स्टॉप कर लीजिए। एम्बर, जब वो आदमी बात करता है, शेक हैंड करती, 1 से 2 बार आप उसे नाम लीजिए, उसे प्रोनाउंस कीजिए। कई बार यूरोपियंस नाम मिल सकते हैं आपको, कभी तमिल प्रोनाउंसिएशन रहता है, कभी तेलुगु प्रोनाउंसिएशन, मलयालम प्रोनाउंसिएशन रहता है, मालूम नहीं होता। हमने पंजाबी वाला आगे उन्हें क्या की बोले आता, उन्हें क्या की बोले, ऐसा दूसरा समझ में आता हमें, तो हमने क्या करना बोले तो स्टॉप करना, सॉरी कैन आई हियर योर नेम प्लीज। दूसरी बार, तीसरी बार आप प्रोनाउंस करना, इज दिस द नेम, आर यू मिस्टर आरोग्यनाथम, करेक्ट सर, सॉरी इफ आई मिसप्रोनाउंस। ये पहली बार को आपको परमिशन है। सेकेंड बार नहीं कर सकते, मिसप्रोनाउंस नहीं कर सकते और मिसस्पेल नहीं कर सकते, गलत नाम नहीं बोल सकते। ये बोलेंगे तो आदमी की आप इंसल्ट करेंगे। सो रेड, येलो, ग्रीन, नाम, पेशा, जगह, 3 चीज आप प्रैक्टिस करेंगे। जगह बोले तो फॉर एग्जांपल देखिए, बैंगलोर से हैं आप, पूरे बैंगलोर से तकरीबन, आप कहीं आउटसाइड से नहीं जाते हैं, तो कौन की लंदन से रहता है, कौन की साउथ अफ्रीका से रहता है, कौन की रहता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जगह से रूट्स मिल जाते हैं, ठीक है, ये एक फॉर्मेलिटी है। लॉन्ग रन करना है आप, तो वो आदमी के बारे में एक एसोसिएशन बनाना है, कार्टून बनाना है, एक अनयूजुअल बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं समझे इमरान से मिला, अब इमरान के बारे में चेहरा और नाम को कनेक्ट करना है, तो इमरान का चेहरा देखो, मैं इमीडिएट क्या करना, ओ इमरान खान भी नो, फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके नो, वो एक तस्वीर लाखों बिठा लेना है। नेक्स्ट टाइम कब मिले तो भी चेहरा देखो, ओ इनके चेहरे क्या मिला, तो ओ इमरान, इमरान भी तो ओ इमरान खान, ओ ऐसा। ये करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है, उसे ट्रेनिंग लगता है। ये सिग्नल का जो है ना, रेड, येलो और ग्रीन, इसे फॉलो करें। और हमारे नेटवर्किंग इवेंट जब भी होते हैं, जो भी होते हैं, हमारी ये प्रैक्टिस रहेगी कि हम जब एक नए शख्स से मिलते हैं तो उनका नाम 2-3 मरतबा प्रोनाउंस करेंगे, चेक कर लेंगे, उसे सेट कर लेंगे। और अपना नाम भी जब बताएं कि आप, फॉर एग्जांपल मेरा नाम रफीउल्लाह बेग है, 3 इसके अंदर अल्फाज है, यू कैन, मैं इंट्रोड्यूस कर, हाय माय नेम इज रफीउल्लाह बेग, यू कैन कॉल मी रफी, यू नो मोहम्मद रफी, आई एम रफी, तो इजी होगा मुझे समझने में। तो ये टिप आप देंगे, आपका नाम ना याद रखना इजी होगा। आई एम रफी, कैन कॉल मी, आई एम रफीउल्लाह बेग, यू कैन कॉल मी रफी। करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग हर चीज अपग्रेड करते हैं, फोन अपग्रेड करते हैं हर साल, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है ऑटोमेटिक, हमारे माइंडसेट को अपग्रेड यही टेक्निक से होता है। कारोबार में जितने नाम आप याद रखेंगे उतना ही आप मशहूर होंगे। डेल कार्नेगी की अपनी बुक 1930 में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में ये गोल्डन प्रिंसिपल आ गया। A man's name is the sweetest in any language. A man's name to him is the sweetest in any language. नाम से आप बात करना बहुत जरूरी है। भाई साहब, बहन जी, बाजी, वो अलग बात है। अगर नाम लगा कर इकबाल भाई, मुस्तफा भाई, शकील भाई, नाम यूज करना बहुत जरूरी है। और एज ए बिजनेस ओनर आपकी टीम के आपको नाम याद रखना बहुत जरूरी है, और आपके एसोसिएट्स के नाम याद रखना बहुत जरूरी है।
मैकडोनल्ड्स के कंपनी का एग्जाम्पल है, अजीम प्रेमजी का एग्जाम्पल है कि वो 50 नामा, 100 नामा, 150 नामा, 200 नामा अपनी कंपनी के जो वर्कर्स हैं टॉप जो इनको रिपोर्ट करते हैं उनको। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। अब मेरा नाम क्या? मोहम्मद Just 30 seconds, I would like to add Rafi Saab because I'm a very big fan of Bond movies. So whenever James Bond comes into action, what does he refer his name as? Bond. My name is Bond. James Bond. So when you break the name into 2 or 3 parts, it is very easy for anybody to understand. So this is one thing I want to retaliate here, so that you can also recall it. यानी बहुत अच्छा एग्जांपल है बॉन्ड के लिए, मतलब निजाम भाई के लिए Back to you. बहुत बहुत शुक्रिया रफीक साहब। Okay, gentlemen, lady and gentlemen. So here we are at the ICCB. So this grand event at our Hillview Premium Resorts of Nilmangla. Sorry for promoting the property along with this. So thank you all, very kind gestures from me and my team that you all are here today. Alhamdulillah, it has been one of the most finest and pleasant events I have ever had because of you wonderful people. Now, without much ado, let me come to the point straight by announcing the names of the members of the IICCB elections 2024-2025. Can we start with the jury permission? First, I would like to call from the bottom comes here Mr. Mustafa Saab as treasurer. Thank you, Mustafa sir. Can we have a picture? Followed by my dear friend, Mr. Afsar Qadri, Vice President Strategies. Wow. Congratulations. The entire event is his strategy. Very rightly said. Next comes, this is a very unique thing here because we have a lady candidate, Ms. Fatima, Vice President, Women Empowerment. Wow. Congratulations. Only arena. Envelopes to distribute. Yeah, envelope no, I'll give it to her. Okay, please. Because she's or maybe from behind. Oh. Next comes, mashallah, Mr. Anas Saab, Vice President, Overseas Affairs. On behalf of Anas Saab, we have Iqbal Saab here. Anas bhai is in Dubai. I would like to call on stage Mr. Syed Hidayat, Secretary. Oh, congratulations. Congratulations, Bashar. बहुत बहुत मुबारक। Soul of the Organization. MashaAllah. So-called soul Very of the hardworking. organization, Syed Hidayat sir. Now, I would like to call on Mr. Azim Khan, Vice President. Congratulations. बहुत बहुत मुबारक। Vice President for President Office. Thank you. Finally, Mr. Amin, President. So-called, after जी. so much, Mr. Noorul Amin Saab. Lord Kalimullah Muhammad Dorul Amin. Congratulations, Amin bhai. Again, Yes. your hands. Yes. You have to lead it the way it's double energy. Very true. Very true. Sure. I would like to ask our President sir to tell few words. Assalamu alaikum. Firstly, I would like to thank all of you who are here today. You have sacrificed your whole day for this very important occasion. Without you and your participation today, we wouldn't have had this event. Allah is very kind and His mercy is on us from the day one of IACCB's inception.
It's today I feel lucky that I got an opportunity to start this organization along with few members in the year 2020 when the COVID was already announced and everybody in and around all over the world. In fact, not only in Bangalore, everybody was struggling. We got an opportunity to. So Alhamdulillah, I still remember the 2020 when we were running behind this COVID crisis. Allah is kind enough to give us this thought in our minds that we should do something for our community upliftment, especially on economic front. It's a small thinking through which we started, and from that day until today, we have completed our journey of 4.5 years. We have got a lot of silver lines, but of course, our best is yet to come. We are here in this journey. We have to continuously strive hard to do something to contribute to the community. As a whole, as a community, if you see today, we are being considered to be one of the most underprivileged community in India. In fact, in other part of the world also, we are not doing great compared to other non-Muslims. Whereas Christians and Jewish, they do exceptionally well in the businesses. So it's an opportunity for all of us that today we are here again to celebrate this election, because we have been getting time and again. This is the 5th year we got an opportunity to serve this community through IACCB. I believe that it's not a it's not a celebration for us for something winning like a title. It's an opportunity to serve. It's a responsibility which we are going to shoulder ourselves. So the day what we have left yesterday, if you have taken a load of 100 kg, today you have to develop yourself to pick up a load of 1000 kg. That's the kind of responsibility we have to show now. So next 1 year belongs to us, and I believe nobody can take away this next 1 year from you. So all of us are going to work as a team, inshallah. Next 1 year, 365 days belongs to us, and we'll prove a point that, of course, we are definitely not just elected, it's chosen by Allah to do something great. Thank you so much. MashaAllah, lovely said. Vote of thanks. Yes, please. Sorry, I forgot to, no, just because my speech is over. So this is the only opportunity I will get. So I would like to take this opportunity to thank the organizers, especially Minaz Bhai, for this wonderful hosting. Alhamdulillah, far away from Bangalore. Trust me, I don't remember when I was in this kind of silent place, because we were in and around this traffic of Bangalore. So thanks to Minhas Bhai that he pulled us out. Today we are all here and there is a lot of peace around us. So of course I have to thank Ishaq Bhai for his wonderful hospitality. He served like a child, serving to the parents. Alhamdulillah, he was everywhere when he was here. So thank you so much. Alhamdulillah, then I have to thank our Afsar Bhai for ensuring that we get this kind of lovely place to have a great atmosphere to celebrate this election day. So overall, I believe that this venue, Hillview Resort, is a wonderful place wherein I find there is a great great hill view, and we all have a lot of trees around, and it's a green everywhere. Okay, alhamdulillah. So alhamdulillah. So there is the next project is Sea View. So in advance, maybe Allah has brought to my mind, to my memory. It's an opportunity. So I take this opportunity to thank him and also wish him great luck. And we ensure that from IACCB, on behalf of my entire team, we will support your project, Hillview Premium Resort, and we'll try to market also from our side to see that you can take the maximum mileage, because it's our duty as a chamber to promote our businesses. And you are part of our community business, so it's our duty as well. So please don't think that you are doing any kind of obligation or doing any kind of क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हम आप पे, ये हमारा फर्ज है, हम निभाएंगे इंशाल्लाह। आगे चल के आपका जो रिसोर्ट है इसको प्रमोट करेंगे, और हमारे चैम्बर की तरफ से जो भी मदद हो सकती है हम अपनी तरफ से इंशाल्लाह एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Prashant sir. Definitely, we'll take this further with your complete team and bring this to fruition, grow together. Thank you. Thank you. Small token of appreciation. For Truly, well deserving. मैं उनको इलेक्शन ऑफिसर के जैसा उनको थैंक नहीं किया, तो आपको करना है।
I don't want to do that because I'm a candidate. But you are a winning candidate. Winning candidate. Still. Okay. आ जाइए डॉक्टर साहब आइए नहीं आप आइए ये किसका है ये आपका है ना तो किसका नहीं हो गया. Okay, then we have a round of applause for this election officer. We'll have a group. Thank you. May I request you to have a big round of applause for all these ceremonies that have been happening here. We have the next item on the agenda, and then we have somebody who is the author trustee of our IACCB, somebody who imagined that this would come up to this level way back in 2020. And this man works silently behind the screen. The best part of this gentleman is he's an icon for our community, for the next generation entrepreneurs. He has taken his first generation business into the next generation, and he has made his business from local to international, truly, in the sense. And the theme of IRCCB is to take your businesses from local to national to international. And we have somebody who is an example in himself. So please put your hands together to welcome the author trustee, Syed Nizamuddin. Not to miss all the points, I have a written speech today. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulih al-Kareem. Amma ba'd. Respected members of Indian Islamic Chamber of Commerce and Bureau, esteemed Election Commissioner Mr. Syed bin Haj Saab, Election Officer Mr. Syed Isaac Saab, other guests Javed Saab, Imran Saab, and my dear ICCBNs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As we gather here today for our election and annual meeting, it fills my heart with gratitude and immense pride to reflect the journey of Indian Islamic Chamber of Commerce, which was established 4.5 years ago. In the month of Holy Ramadan, Alhamdulillah, we embarked on a noble vision to uplift our community economically and establish a platform for conducting business in accordance with Islamic principles, in accordance with Indian law and Indian framework. From its inception with zero capital, our organization has grown by the grace of Almighty Allah. It is all His blessings. And through the tireless efforts of all our dedicated members. Some members are present here, some members are not here, and some members have already paid heavenly abode. May Allah grant them all maghfirah and grant them highest place in Jannah. With this prayer, together we have facilitated business transactions amounting to several crores, appeasement to our commitment and division. ICCB is just not a non-profit NGO. It is a beacon of hope to our community. And to each and every individual who has some aspiration of becoming entrepreneur, of achieving something great in life. Here, we have faced challenges along with the way. Nothing comes easy. There are a lot of challenges that we have faced, and this has strengthened us to resolve it. We have witnessed transition in our second election of office bearers today. I extend my heartfelt congratulations to all the newly elected office bearers. And I also take this moment to express my deepest gratitude for each and every individual who has contributed to the formation and success of this incredible organization. Your support has been invaluable. To our outgoing office bearers, I extend a special thank you, especially to Khansa for the relentless efforts what he has put forward. Your services, leadership have been instrumental in steering the ICCB in formative years. Your support is invaluable. Now, with a solid foundation in place, I urge the newly elected office bearers to seize this opportunity of leading the ICCB and taking this to the next level. Our primary goal remains the same. There is no any change. The economic
upliftment of our community. Let us work together tirelessly and sincerely and dedication, knowing that our efforts are not just for today, but for the blessings of Allah and for a prosperous future for all of us, all of our community, inshallah. To the newly elected office bearers, I want to emphasize that we are here to collaborate and support you in every possible way. Together, let us strive to serve our community with integrity and compassion. For it is only through such noble intentions that we can hope for Allah's blessings upon us. May Allah guide us and bless us in all our endeavors. Waqil da'wana and alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you. Sure. Here we have a list of newly elected office bearers of ISCB with me here now, and it's an opportunity to give them a chance to speak a few words on behalf of the post and the responsibility that is being bestowed on them. I request the following people to come up and then present their views. One is you can come and say thanks, and we all expect that. But what I would like to request you to share a few agenda, a few goals that you have in your mind to achieve as a role of the treasurer, vice president, president, and then secretary, joint secretary. What is that you would like to focus during your tenure for next 1 year? Because what you see in your mind is what you achieve in your real life. So Allah subhanahu wa ta'ala will ask you what you want first. So you have to spell out your game for next 1 year. I would like to focus on this thing. Inshallah, we'll work towards as a team and take it further. Inshallah. 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 क्योंकि मांगना है तो उसके शान के हिसाब से मांगना। कर दो सोने के 100 टुकड़े, कीमत कम नहीं होती। कर दो सोने के 100 टुकड़े, फिर भी कीमत कम नहीं होती। अपने माल से सदका देने से दौलत कम नहीं होती। अब आपके पास में माल है, माल का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता। एक अहदा है, एक पावर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बताइए क्या करना चाहते हैं? So we will like to welcome you. We'll give a time of what? 5 minutes. 5 minutes is too much, bhai. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. We'll start with the treasurer because he seems to carry a lot of weight around him. Please welcome the newly appointed treasurer of ISCB for the year 24-25, Mr. Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I thank God that He has given me a chance to serve the community, and at the same time, I thank everyone again. See, there was no competition, that's why I think I got selected. However, having said that, I make Allah give me a full strength to do this job with responsibility and full amanatdari. So the agenda of 1 year, whatever I am thinking about, is because we from last 4 years we are thinking we should open initiate one internal business house, big business house, which we are planning, but it never happened so far. Inshallah, we will put full effort to have our own ISCB initiative for one business house from among ourselves. That's what is my aim is. I was always thinking, and I hope we will try to achieve. But that is not there in our bylaws. We can't do it. No, we'll help the community. Outside. In the sense, we'll help Outside. business house. Yeah. So that's it. Yeah, thanks. Thank you. Quickly, I think because of the weather conditions, we need to wrap this one. Kindly call in the name. अल्लाह ताला का फरमान है कि जब बारिश होती है तो दुआ मांगा करो। बारिश में मांगी हुई दुआ अल्लाह का वादा है कि वो कबूल करते हैं। तो हमें जो भी यहाँ बैठे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए बैठे हैं, हमारी दुआएं जारी हैं। तो अल्लाह का एक निजाम देखिए, बारिश भी दे रहा है और दुआ कबूल करने की वादा भी कर रहा है। आइए निजाम। तो नेक्स्ट इज द जॉइंट सेक्रेटरी सैयद अली, and please welcome Sayyid Ali with a round of applause. Congratulations once again, Ali sir. Assalamualaikum to all.
I don't have any words for this. It was a wonderful election conducted by Minhaj Musab and Shah Saab on that. And also Afsar Bhai has provided us such a wonderful, I would say, the event which was organized well. Thank you, Afsar Bhai. And well, इधर competition तो मैं समझता हूँ मैं खुद competition अपने आप के लिए लगे हूँ. That's how it is. Everybody is a competitor for themselves. So why? Because we don't have a contestant. It is not that we want to compete ourselves so that we'll bring our standards up. We'll have very high standards on whatever we are doing right. So I, of course, जैसा FI बोले, सोने के 100 टुकड़े कर दिए तो इसकी वैल्यू कम नहीं होती. अब मैं चाहता हूँ कि सोने के जो 100 टुकड़े हैं वो सब बन के एक बड़ा टुकड़ा बन जाए जिसकी वैल्यू और बढ़ जाए. तो इंशाल्लाह इसके आगे जो है एज ए सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के साथ और मैं I have a vision that will go further with the next level of achievements what we are planning. आज local है, कल global होंगे. So that is what is my vision. And इंशाल्लाह इसके लिए चलते जाएंगे और कारवां बनता जाएगा. जरूर. So thank you once again for giving me this opportunity. I definitely look forward to give my best to the society, to the community, to the organization to grow. Thank you.